मैम वीडियो ऑन कर सकते हो? क्या मैम? वीडियो ऑन कर सकते हो सानिया? यस यस मैम यस। रेडी? Yes ma'am. स्टार्ट। Hi everyone. As you know that my name is Sania Tamboli. I am from Manjar, Pune. I reside in Shinoli and have a family of 5. I have done my FYBA and now I am completing my NPCS course under the guidance of Neeta ma'am. Talking about my interest or hobbies, I like reading in my free times. I like to listening music, singing a song, and I also like it to draw a mehendi. I am a really energetic and a great communicator. I am speak Hindi and Marathi fluently, but now I am trying to speaking English as a good manner. Thank you, ma'am. गुड, वेरी गुड सानिया। सबको क्लैप करना है तो कर लो एक बार। Thanks, ma'am. हाँ, यस सानिया, वंडरफुल। अभी आपका ना जो कोर्स का नाम है, आपको वो बताना था या कंपनी का नाम बताना था, पता नहीं, लेकिन आपने एनटीसीएस बोला तो एनटीटी बोलना था, क्योंकि अपने यहाँ से कर रहे हो तो फ्रॉम एन। हाँ Yes, ma'am. ठीक है। तो कोर्स का नाम आपको बोलना पड़ेगा एंड देन फ्रॉम एनटीसीएस यू कैन से। आपने कोर्स के नाम में एनटीसीएस बोल दिया, तो वो थोड़ा सा करेक्ट करना। बाकी ठीक है। हाँ बोलो मैम, मतलब मुझे MTC प्लस ECCED कोर्स है ना मेरा, तो उसका नाम लेना था क्या? एनटीटी। हाँ एनटीटी बोलो एनटीसी की वजह, क्योंकि वो कंफ्यूजन होता है ना, फिर अपने कंपनी के नाम में भी एनटीसीएस है, तो ठीक है एनटीटी मैम। बोलो, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। ओके मैम। ओके श्रुति स्टार्ट। Good evening. My name is Shruti Nair. I have completed my diploma in electronics and telecommunication from Nutan Maharashtra Vidya Polytechnic. I have completed my Montessori course from International Institute of Teachers Training from AUN. Now I am pursuing my DED course from Neeta Institute uh, from Himle Sodagar. Uh, I have worked with TLC for 1 year. That is the learning curve from 1 year. There I was school teacher for PT class, and I love to draw and paint. I like to listen to the song. I like to travel a lot. Uh, and thank you. गुड गुड, यस क्लैप कर लो सब श्रुति के लिए। यस श्रुति, आपका प्री प्राइमरी का ऑलरेडी कहीं और से हो चुका है क्या कोर्स? हाँ, मॉन्टेसरी का कोर्स हुआ है आउंड किड्जी आउंड में जो है ना, वहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग करके है, तो वहाँ से मैंने किया है और ओके डिप्लोमा। गुड गुड। एनीवन एल्स वांट टू डू द प्रेजेंटेशन? मैम टुडे आपने नहीं किया था क्या? मैम किया था, बट दैट टाइम आई मिस समथिंग, सो आई थॉट टुडे आई कैन, इफ यू विल गिव परमिट मी, सो आई कैन present अगर myself. किया है तो रुक जाओ, इफ Okay. एनीवन एल्स इज देयर, रिपीट का देखते हैं। और किसी को करना है जिन्होंने नहीं किया था, ऐसे कोई है? And ma'am, what about presentation? Ma'am, on Thursday should I give the presentation? Ma'am, आज तो नहीं, प्रेजेंटेशन कल परसों देखते हैं, क्लास में देखना। आज का तो अपना इसका नहीं है ना, पर्सनल डेवलपमेंट सेशन है। और किसी को देना है इंटरव्यू टेक्निक्स का, जो अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, उसका प्रेजेंटेशन और किसी को देना है? ओके ठीक है, श्योर, आप कंप्लीट कर लो 1 मिनट में। एक मिनट से भी कम में होता है तो उसमें कर लो, ठीक है? good evening, everyone. एक मिनट। Okay. हाँ करो। Good evening, everyone. Myself Shubham Agrawal. I completed my graduation from Agra University, and my academics is from CBSE, and I completed my MBA from Autonomous School, ABM College, and right now I am pursuing NTT TTC course from
Neeta Training Consultancy Service under guidance of Neeta ma'am. I appointed as a teacher, a nursery teacher in the Rabbit Tortoise School right now. And I am looking for some other job in for enhance myself. And I am married. I have 3 siblings, and I have 2 kids, and my husband is he is an engineer, and he is doing job in a market company, and I want to looking job in some other schools for enhance my knowledge and my career objective. That's it. ओके तो अदर स्कूल मतलब आप जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो तो इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो फॉर दैट व्हाट्स द रीजन देन यू आर सेइंग कि ओके फॉर enhancement of your knowledge and upskill yourself so rather than saying in front of them saying other school you just ask them ki as I'm coming here today so I have given interview so your organization you should mention them means whoever you are giving the interview उनके सामने ऐसा मत बोलो कि दूसरे स्कूल में मैं देख रही हूँ हाँ Okay. No. okay so now today's topic is communication skills so first let's have some brief discussion about the topic and then we will start so what do you understand when I say communication skill yes what do you mean by communication what do you mean by skills first दोनों का अलग अलग देखते हैं मीनिंग क्या है and then फिर communication skills क्या होता है ये आपको yes Ma'am, how you communicate, how you Communication it's all it means you have to present yourself in a good manner, in a good way. You have a good thoughts. The person can click on this mind. Yeah, this is a meaningful. Whatever you are communicate, whatever you are just expose yourself. It should be a meaningful. It should be a worthy. So the person can impress you with your thoughts, with your feelings, with your exposure, with your knowledge. And skills is comes on that. The communication is the interaction. communication is interaction okay Communication. It is a medium of sending and receiving the information. correct sending and receiving of information through communication channel you may send and receive very good anything else Conversation between two entities or more than two entities okay anything else Communication To is talk the conversation between two people in a positive manner. okay very good that is communication right anything else any more input from you communication skills is a clarity and correctness in your body language and all. okay very good Ma'am, communication is other way you are expose your feelings. You are exposing your thoughts. You are exposing your ideas. You are. That's This it. is इतना the expose communication. करो, बहुत ज़्यादा expose मत करो हाँ, ठीक है। okay anything else yes, ma'am. Skills meaning the ability to do something in a well manner. Skills. very good okay in well good manner professional manner that is you may say communication very good any other inputs fine so basically if at all two people want to communicate what are the different mediums of communication what do you think now you have just give me a few inputs ki what do you think about communication or communication skills now if at all I would like to communicate with other people what are the tools or mediums through which I could communicate with others Language. yes
language is the first. Science. Sign Science. language, yes. So spoken language, sign language, yes. देन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन। पहले के ज़माने में कबूतर जा मैसेज भेजते थे, चिट्ठी लिखते थे, है ना। राजा महाराजा के टाइम पे भी वो होता था, चिट्ठियाँ लिखते थे। फिर पोस्ट ऑफिस आया, फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे एंड देन वी कुड कम्युनिकेट विद पीपल हु आर स्टेइंग फार फ्रॉम अस। देन लेटर ऑन अपने ये वाले फ़ोन आए, लैंडलाइन फ़ोन आए। अब मोबाइल है हर किसी के पास, हर कोई कहाँ पे भी बैठा है, वर्ल्ड वाइड हम बहुत ही आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट मे बी एनी मीडियम, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू SMS, थ्रू कॉल्स, video calls, chatting. There are several channels now to communicate with each other. So these are the several mediums of communication, right? So basically in all these medium, what is the single thing which is common? You all should know at least one language, and mostly universal is English, है ना। English. तो यूनिवर्सली जो सबसे ज़्यादा आप कोई भी सॉफ्टवेयर या वेब पे सर्फ करोगे, अभी तो आजकल काफ़ी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बहुत सारे एप्स एंड ऑल रन होते हैं, बट द बेसिक थिंग इज थोड़ा बहुत तो इंग्लिश हर जगह पे आपको आना ज़रूरी है। Now, whenever it comes to English, of course, for us, like for Indians, English is a second language. ठीक है, तो हम सारे जो है SLL है, इंग्लिश हमारे लिए एज अ सेकेंड लैंग्वेज है। तो एक्चुअली हमारे क्लास को ESL क्लास कहते हैं, दैट इज इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो हम सारे ही लोग जो है, हमारे लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो कुछ और है, एंड इंग्लिश हम सबके लिए एज अ सेकेंड लैंग्वेज है। Now this second language, as it is having a universal acceptance after nationality, means our national language we say Hindi, but there are many people who don't know Hindi. South Indians अगर आप देखोगे तो mostly they don't know Hindi very nicely, और कभी आता है किसी को, या फिर they always prefer English rather than Hindi. एंड एक बार मैंने किसी इस पे बोल दिया नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो कुछ लोगों ने बहस करना शुरू कर दिया कि नहीं, हिंदी कैसे क्या नेशनल लैंग्वेज हो सकती है। अरे अपना नेशनल एंथम है, इसलिए मैंने बोला सब जगह पे है नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, बट मेनी ऑफ द पीपल एक्चुअली डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट नो व्हाई, बट जितना एक्सेप्टेंस इंग्लिश के लिए है, उतना एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं फिर हमारी राष्ट्रीय भाषा के लिए भी लोगों के पास नहीं है। ये बताते हुए खेद हो रहा है, बट एक्चुअली दैट्स अ रियलिटी एंड दैट्स अ फैक्ट। सो द थिंग इज, ऑफ कोर्स एज एक्सेप्टेंस इज यूनिवर्सल एंड there are many different media tools, and there are several other things which actually expect communication basically in English. And when it comes to professional spaces, whenever as and when it comes to your professional life, means your working style, and wherever actually you are meeting professional people, there are acceptance that you need to communicate better in your oral language, but that should be English, right? So of course oral language is the first and foremost widely used medium of communication. First is spoken language, सबसे ज़्यादा होता है स्पोकन। अभी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वगैरह जितना भी है वो सारा स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू ही होता है ना। साइन लैंग्वेज है, उसके बाद फिर आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन, है ना। देन रिटर्न कम्युनिकेशन के बाद आपका अदर देन दिस, जैसे डम एंड डीफ वगैरह है तो वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो ब्रेल लिपि यूज करते हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं एंड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। अब कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए आप लोग, मतलब हम सबको 4 स्किल्स आना जरूरी है। वो 4 स्किल कौन से है? स्पीकिंग, then listening, LSRW. then Reading. writing, LSRW. Reading. and reading. क्या हुआ? कुछ स्पेलिंग? LSRW.
अच्छा, LSLWR ऐसे वो बोल रहे हो क्या? हाँ, तो speaking, listening, writing, and reading. So these are the 4 skills which are very, very important as and when it comes to any kind of communication skill or language speaking, anything. So these are the 4 minimum requirement. आपको वो language of course पहले आप सुनोगे, then आप बोलोगे, उसके बाद फिर आता है आप उसको कैसे लिखोगे and आप उसको कैसे पढ़ोगे. तो of course when it comes to oral language, first language which you take, that is your native language, that is your mother tongue. And mother tongue, it's not necessary if you could speak mother tongue, it's not necessary that you could read it and write it. Of course, as and when you go to school, at that moment of time you will learn how to read and write a specific language. So it may happen that nowadays children are learning English as the first priority is to English, and then this local language comes later, means Marathi or Hindi, then it comes later, and they learn it later. मतलब पहले ABCD सीखते हैं और आ ई बाद में सीखते हैं. That is what is current trend going on, and that's how they learn to write whatever their mother tongue they are using later. First they write second language, right? So this is what is few are the basics of communication skill. Now of course, as I have already given you introduction ki why when it comes to communication skill people actually take it vice versa for English language only, but actually when it comes to communication skill it's not specific for English. You should have good command on whatever language you are very comfortable with, but as and when it comes to professional background, at that moment of time you are expected to have fluency onto your English language, and that's why as and when it comes to communication skill people take it vice versa, that okay, you could speak good English or not. So of course we are considering most of the time that we have to work on a English language communication skill, but otherwise communication skills are not limited for English language, it's for all any language. There is no limitation for communication skill, right? So now let's start with today's session. So this was just an introduction. My screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो 2 कोट्स लिखे हैं, पढ़ते हैं. Something resides in this heart that is not perishable, and life is more than a dream. दिल में जो भी है ऐसी कुछ चीजें हैं जो पेरिशेबल नहीं है, कभी खराब होती है कभी नहीं होती है. ऑफ कोर्स अपने जो सब्जियां होती है वो खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रखी हुई चीजें जो है हमेशा फ्रेश रहती है ना. एंड ऑफ कोर्स लाइफ जो है एक सपने से भी बहुत बड़ी होती है एंड बहुत ज़्यादा सपने भी दिखाती है. तो एक थोड़ा सा कोट से हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. दूसरा और एक कोट है, टीचिंग इज द वर्क ऑफ हार्ट, है ना, दिल से आ रहा है. ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्चुअली दिमाग लगता है, बट जब आप दिल से करते हो ना तो ये चांद लगा देता है या फिर रौनक आ जाती है आपके टीचिंग प्रोफेशन में. तो समहाउ जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है वही सबसे पहला इम्पोर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू टीचर्स जॉब, है ना. If you are into teaching profession, your communication skills needs to be very strong, and those people who are good orator, actually they could work nicely in teaching field. Until and unless you are not a good orator means आपका oral language जो है उसका command, मतलब you could influence people, you could motivate people, you have that ability that you could control others mind. Control means आपको hypnotize नहीं करना है आपको उस लोगों को, बट एक होता है कि एक पर्सन जब बात करता है एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, एंड कोई कितना भी जोर जोर से चिल्लाता है, डस्टर पटक पटक के मारता है, फिर भी बच्चे नहीं सुनते या फिर भी शांत नहीं होता है क्लास. मतलब ये 2 टाइप के मैं पर्सनालिटी आपको बता रही हूँ. तो जहाँ पे एक्चुअली आप में वो अगर इन्फ्लुएंसिंग पावर है तो ऑटोमेटिकली आप जो है लोगों का माइंड कर लोगे, एंड अगर नहीं है तो then it will be very difficult. But when it comes to communication skill or teaching profession, you need to have
those skills, and you need to actually, if you don't have, you need to develop those skills. So now let's start with today's session. Of course ये overall अपना जो grooming session है, हम ये step by step सीख रहे हैं. तो आज का अपना जो topic है lesson number 1 का है verbal and non verbal communications. ये जो बाकी के हैं जैसे lesson 3 जो interview techniques है, ये भी हमने already देख लिया है. तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी ही चीजें हम देखने वाले हैं. जो हमारी ट्यूसडे सीरीज अभी चल रही है पर्सनल डेवलपमेंट की, ये पूरी सीरीज में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं. तो टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल. ओके, so developing communication skills. So language is the medium of communication. For successful communication using language, one needs to develop these 4 skills. So we have already discussed about listening, speaking, reading and writing. So with any language, if you'd like to develop your communication skills, of course you need to listen that language, then you need to use that language in speaking, then you need to read it. Otherwise, if you could not read it, how you will develop the communication, or how you will enhance yourself within that particular language, and then of course writing it. So these are the 4 basic skills that you need to develop to make command or to be good in any of the language. बाकी लोग प्लीज म्यूट पे रहो, डिस्टर्बेंस हो रहा है. Okay, now how to improve your communication skills. Now whatever kind of tips I'm going to give you, you need to follow it if at all you would like to improve your English communication skills. Now first is, you can't learn English from book like driving a car. You can only learn through doing it. Now driving a car, swimming, horse riding, what are these all? These are skills, right? And when it comes to communication, at that moment of time also we said skill. एक minute, तो सब बंद करना है. So when it comes to any kind of skill, you need to perform within that. Actually you should have your active participation, then and then only you could actually perform into that particular skill. अगर आपने बोला कि हाँ स्विमिंग करना है, सारी बुक पढ़ ली, अगर आपने हजारों बुक्स पढ़ ली कि ऐसे स्विमिंग करते हैं एंड फिर पानी में कभी आप कूदे ही नहीं, तो क्या आप स्विमिंग कर सकते हो? क्या आपने सारे बुक्स पढ़ लिए ड्राइविंग क्लास के लिए एंड गाड़ी के स्टीयरिंग पे कभी बैठे ही नहीं, तो क्या आप ड्राइविंग कर सकते हो? वैसे ही हॉर्स राइडिंग का, एंड वैसे ही लैंग्वेज का है कि अगर आपने लैंग्वेज के लिए बुक में कितना भी पढ़ा और उस लैंग्वेज को अगर यूज नहीं किया तो एक्चुअली डेवलप नहीं होगा. फिर बोलते हैं ना लोग, मैंने इंग्लिश का क्लास किया फिर भी नहीं हुआ, मैंने बहुत न्यूज़ पढ़े, न्यूज़ देखे सुने, फिर भी नहीं हुआ. सब किया लेकिन उसको यूज करना अगर रह गया तो देन एक्चुअली इट्स ऑफ नो यूज. सो बेसिकली to develop any kind of communication skill, firstly you need to use that particular skill, you need to practice that particular skill, then and then only you could develop that skill, otherwise it's not possible, है ना. तो सबसे पहले तो फिर कैसे डेवलप करेंगे? तो बेसिकली nowadays you are having so many apps through which you could actually practice. अभी मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैं उसके नाम बताऊंगी. वहां पे क्या होता है कि जो लैंग्वेज आपको सीखनी है उस ऐप पे उस लैंग्वेज का एक्सपर्ट आपके साथ बात करता है. तो इट मे बी अ सिंपल काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन, बट दे गिव यू टाइम एंड इट्स अ रियल टाइम कॉन्वर्जेशन. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेली कैसे सीखूं, तो यू मे टेक द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ टूल्स. अदरवाइज मोस्टली बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं ही, छोटे बच्चों के साथ अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो उनका भी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका भी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा. Nowadays we are having these classes and all, you may do friendship and make a team. Okay, we will have some kind of conversation between among ourselves, and that's how we may improve our communication skills. So that's how you can take the help of all these tools and techniques available. Otherwise, whatever resources are available around you, you may just try to use it, and accordingly you have to develop the skill. So first foremost important tip is you have to use it. Until and unless you'll not use it, you can't develop your communication skills. Now the second point is, the most natural way to learn grammar is through talking. Now
if you'll consider the example of our mother tongue, actually no one teaches our any grammar of our mother tongue by taking the difficult book and complex syntaxes, but still we could learn the grammar. Means हम correct बात करते हैं ना, हमारी जो भी mother tongue है, mother tongue mein initially it may found that small kids make some kind of confusion and they are having some kind of difficulties when they are speaking long sentences, but later on automatically they correct themselves and actually they could speak in their mother tongue very fluently and without errors in the grammar. So basically it's not the thing that you should know very complicated grammar rules, you should know the syntax and then only you learn the language. No, it's not like that. So if at all you could start speaking automatically, you'll feel that ये यहाँ पे fit नहीं हो रहा है. It should not be like this, and that's how you automatically improve it or day by day. So what you have to do is for improving, you have to record your voice as and when it comes to जैसे मैंने बोला कि you have to practice. You have to practice either along with some kind of online tutor or some friend or with your family member. So as and when you are doing some kind of conversation, take some recording, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes recording of yourself, and then try to find out ki, okay, how many mistakes I have done within this kind of conversation, whatever I am making. Okay, whether there are some grammatical mistakes here, whether I could find out the mistakes and I could correct it. And that's how you try to find out your own mistakes and try to recover your mistakes and try to make it correct next time whenever using the same kind of communication. So that's how you need to talk it, and this is the natural way through which actually you could improve your grammar. तो grammar सीखने के लिए आपको अलग से कोई बहुत सारे बुक खरीदने हैं या फिर उसके सिंटैक्सेस याद करने, ऐसा कुछ नहीं है. नेचुरल वे से अगर आप बात करोगे तो दैट इज also helpful technique to improve your grammar. Then the third tip is keep an English diary or journal. Start by writing a few sentences a day and then get into the habit of writing more. Now, if at all you may have some habit of writing, at the end of day, whoever write diaries, that's fine. If at all you are not writing, you may develop that skill or that habit now, just to improve your writing skills in English. So whatever you have done throughout the day, okay, it was wonderful day today, I met my college friend, actually I feel so grateful that, oh, after so long I meet her. Now whatever kind of day you must have, you may write the whole of your experience, try to put those things into English language, and then what will happen, you may feel like as and when it comes to some kind of vocabulary, you yourself will feel कि अरे इसको क्या कहते हैं, इसे मैं कैसे लिखूं, ये यहाँ पे कैसे आएगा. Then for that purpose you have to use reverse kind of dictionary. मराठी से इंग्लिश वाला डिक्शनरी या हिंदी से इंग्लिश वाला डिक्शनरी, मीन्स वॉट एवर इज योर मदर टंग, उसका जो रिवर्स वाला डिक्शनरी आता है. जनरली हम इंग्लिश वर्ड का फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, बट वाइज वर्सा भी आप कर सकते हो. सो वेर एवर यू फाइंड डिफिकल्ट वर्ड्स और यू डोंट नो और यू आर getting difficulty in finding words for a specific words or vocabulary, in that case you have to use reverse dictionary. And nowadays on Google you type anything, actually you will get so many options to get that solution. So nowadays it is very easy to get everything. आपको इतने बड़े बड़े डिक्शनरी भी लेके बैठने की जरूरत नहीं है या फिर खरीदने की जरूरत नहीं है. हर कुछ आपका जो है सारा काम स्मार्टफोन में हो जाता है. So that is how you could improve your writing skills also. And if you start writing and start developing this kind of good habit, what will happen, your grammar will get automatically corrected, your vocabulary will improve, and your writing speed will also improve and your of course जो writing है आपका handwriting है, handwriting भी improve हो जाएगा. बहुत सालों से ऐसे हो गया ना कि लिखने की आदत बहुत कम हो गई है. सब कुछ है ना, प्रिंटेड में है, सब जगह पे सारी चीजें अवेलेबल होती है. तो मैडम फोटो निकाल लिया ना, नहीं लिखा, यहाँ पे भी क्लास में आते हैं तो वही वैसे ही बोलते हैं मैडम लिखना क्यों है, लेकिन मैडम लिखने के लिए बोलती है ना. तो लिखना एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब लिखते हो तो सेम चीज पहले आप पढ़ते हो देन लिखते हो, तो एक्चुअली वो टॉइस उसका रिविजन हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई देन for memorizing the same thing it will be very easy. So that's why when you write, actually there is
more opportunity that you may remember it, है ना। पहले हम एक एक फोन नंबर को डायरी में लिख के रखते थे एंड फिर वो फोन नंबर को हम एक एक नंबर को डायल करते थे, इसलिए हमें बहुत सारे फोन नंबर्स याद रहते थे। अगर आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब डायलिंग वाले फोन नंबर मतलब लैंडलाइन फोन रहा करते थे, अभी भी है बहुत सारी जगह पे, लेकिन उस टाइम पे हमें लोगों के फोन नंबर याद रहते थे। अब ऐसी कंडीशन है कि खुद के फोन नंबर लोगों को याद नहीं रहते। सो अपना जो मतलब एक एक अपना हुनर है ना, वो कम होता जाता है। जैसे आप उसको यूज करना छोड़ते हो वैसे ही वो कम कम होता जाता है। और थोड़ा सा पीछे जाओ, जब कैलसी नहीं था, जो राशन वाले लोग है ना, पूरा लंबा कैलकुलेशन और खुद करते थे और पूरा करेक्ट करते थे। तो अभी तो ऐसा है कि 2 नंबर का 2 डिजिट का एडिशन करना है तो कैलसी चाहिए लोगों को, and that's how we could not actually count these many digits together, or we could not do the simple calculation. So जिस चीज को हम यूज करना छोड़ देते हैं या फिर जो हमारा हुनर है उसको हम छोड़ देते हैं, वो हुनर हमसे छूटता जाता है और वो हमसे कम होता जाता है, मतलब फिर हम उसको उस कैपेसिटी को उस तरह से यूज नहीं कर पाते। ठीक है, अभी 1 मिनट ही बाकी है, एक पॉइंट लास्ट वाला कर देते हैं, देन यू ऑल हैव टू रीजॉइन। करोगे रीजॉइन या फिर नेक्स्ट टाइम करना है? करना है? मेरा 6:30 को शायद दूसरा एक क्लास है, तो लेट्स सी 6:30 तक तो हम कर सकते हैं और दूसरे इसमें। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। चिल्ड्रंस बुक्स हैव इजियर वर्ड्स and are a good alternative to graded readers। ठीक है, मैं ये इसको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट इसमें। तो अभी इस मीटिंग को हम स्टॉप कर रहे हैं, सभी को फिर से रीजॉइन करना है सेम मीटिंग को। ठीक है, सेम लिंक को, जो अपने रेगुलर स्टूडेंट नहीं है वो भी रीजॉइन करो। ठीक है, यस मैम। चलो, थैंक यू।